Hi guys. Today I'm not going to talk about tarot or English grammar. मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक इंसिडेंट साइबर क्राइम का जो मेरे साथ हुआ 3 दिन पहले. It is very embarrassing, in fact, humiliating for me to admit that I fell prey to this scam, but I still want to share it with you so that आप लोग alert रह पाएं. In hindsight, of course, my actions were completely moronic. It should never have happened. But apparently, these scammers target people and make them so unsettled that they'll end up doing something they should never have done in the first place. So, 3 days ago, I posted something on OLX because I wanted to sell. It was a furniture item. And OLX पे मुझे buy and sell करते हुए stuff, it's been years. It's been 7-8 years and I've never had a problem before. But this I did after a long time. एंड इमीडिएटली मुझे एक लेडी का रिस्पॉन्स आया. इनफैक्ट काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस आ गए थे, बट आई चोज टू गो विद दिस वुमन बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड. So she had agreed to the price I mentioned, so I said, fine, that's okay. 2 minutes later, a man called me and he said कि I am this person's husband और मैं रिपर्पस्ड फर्नीचर सेल करता हूँ. मेरा शॉप है यहीं नोएडा में एंड आई एम इंटरेस्टेड. सो मैं पेमेंट कर देता हूँ पेटीएम से और मेरा लड़का 1 घंटे में आके ले जाएगा जो भी सामान है. और आपके पास कुछ और भी है तो आप बता दीजिए. सो आई टोल्ड हिम आई हैड अदर स्टफ ऑल्सो. सो वी अग्रीड टू अ फिगर, लेट्स से एक्स अमाउंट. एंड ही सेड कि मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, मेरा मर्चेंट अकाउंट है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका प्रोसेस. एंड ही सेड आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. आई सेड लुक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट. आपके शॉप में कोई तो होगा जिसके पास पर्सनल अकाउंट होगा. ही सेड नहीं, किसी के पास नहीं. So I said, then let's forget it. So he said, he got very aggressive. He said, क्या मैम छोटी सी अमाउंट है, आप इस ऐसे करो वैसे करो. मैं 5 रुपये भेज रहा हूँ, आप देखो आपके पास आएगा, आप खुद मेरे को फिर सॉरी बोलोगे. सो बहुत इंसिस्ट करते 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 ही सेंट मी 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ रिसीव हो गए. आई सेड हाँ आ गया है. सो आई सेड बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस. ही सेड बट मैंने तो आपको भेज दिए वो एक्स अमाउंट. आई सेड मैंने तो नहीं बोला था आपको भेजने के लिए अभी. आई सेड कि मैं पहले देखूंगी 5 रुपये, उसके बाद आई विल डिसाइड. ही सेड नहीं नहीं, मैंने तो ट्रस्ट करके भेज दिया आपको. एंड ही सेंट मी अ स्क्रीन शॉट ऑफ द ट्रांजैक्शन, पेटीएम ट्रांजैक्शन इन माई नेम, और वो अमाउंट था उसमें. सो आई चेक्ड माई अकाउंट, देयर वाज ऑब्वियसली नो मनी. सो आई सेड नहीं, आपका मनी नहीं आया है मेरे पास. देन सडनली ही गॉट वेरी अग्रेसिव एंड वेरी अब्यूजिव. ही सेड मेरे पैसे वापस करो, मेरे तो कट गए हैं, मैं क्या, मुझे नहीं पता. एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग. मतलब इतने गंदे गंदे गालियाँ उस बंदे ने दी हैं दैट आई गॉट वेरी अनसेटल्ड बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज at all. And apparently this is their mode of operation. They deliberately do it because when someone starts shouting at you and abusing you like this, and it is completely uninstigated, it tends to unsettle you for a few moments, for a few minutes. और उन few minutes में you lose your clarity of thought, which is exactly what happened with me. Brain freeze, I think you can call it. So I just had this in mind that I don't want this guy's money. I will give it back. So I said, but he said मेरे पैसे वापस करो. I said आपके पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं वापस करूँगी ना, मेरे पास नहीं आए हैं. He said आएंगे मैम, आपको एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा उसके लिए.
and he sent me a QR code. Now, my absolute foolishness, I keep telling the whole world not to, scan QR codes from unknown sources. I landed up doing exactly the same thing myself because I thought I was receiving the money. He said, आप कर लो, आपके पास आ जाएंगे. नहीं आए. He said कि मैम ये फेलियर हो गया, एक बार आप और आपको स्कैन करना पड़ेगा. So like a complete fool, I scanned it a second time and I lost double the amount. Now this was not an amazingly large sum, but it was still a pretty substantial amount of money. And later, of course, I saw कि मेरा पूरा account खाली हो गया है. There were only 500 rupees left in it. And then I spoke to my dad. I spoke to someone else and filed a police complaint. Spent the entire evening filing a complaint on the cybercrime website, which I finally succeeded in doing. So now the case is with them. I don't know whether this money will come back or not. But I also, of course, first thing I did was to go to the bank and get my account frozen. So वहाँ पे भी, in fact, the lady sitting at the counter said कि मैम आपने जमतारा नहीं देखा. I said कि नहीं, I'm sorry, मैंने नहीं देखा. And a couple of more people also said कि आपने जमतारा का episode नहीं देखा. This seems like a repeat telecast. Unfortunately, guys, मैंने नहीं देखा है. And maybe if I had seen it, ये नहीं होता मेरे साथ. Maybe, I don't know. It's just that it was meant to happen, I think. But last के 2 दिनों में मुझे इतना ज्ञान मिला है on cyber security from different sources that I want to share a few tips with you. Just from my own experiences and from other people's experiences. Keep this in mind. कभी भी आपको ऐसा कॉल आता है, number 1, be aware that it could be a scammer. If that person insists on a different kind of transaction, UPI transaction, but उसमें complicated process बता रहा है, it is most probably a scam. If you can avoid UPI altogether, avoid it. Best is कि आपको वो cash दे या check. So you can say subject to clearing of the check, you'll send whatever stuff. Third is, of course, bank transfer. So where you can trace the sources, and that is the best thing. And secondly, if that person doesn't allow you to go off the phone, अगर बहुत aggressive हो रहा है, phone से उतरने नहीं दे रहा आपको, saying all kinds of things, it is probably a scammer. Third thing, this starting abusing without any instigation is a tactic. Stay alert. This is a scammer. Fourthly, never ever check your account while you are on the phone with someone. Fifth, अगर आप ऑनलाइन भी अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, लेट्स से ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर डेस्कटॉप, आप क्विक हील का ब्राउज़र में ही करिए. दैट इज़ द सेफेस्ट. मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं, इट इज़ सपोज टू बी गुड, बट अगर आपका फ़ोन किसी और के हाथ में पड़ जाता है फॉर सम रीज़न एंड दैट पर्सन हैज़ अ पासवर्ड क्रैकर, पासवर्ड कोड क्रैकर, it can be a huge problem for you. So avoid that. Apart from this, apparently आधार कार्ड जो हम लोग को सब जगह देना होता है, we don't have everything in our hands, but we do have some things in our hands. आजकल there is something called a masked आधार, जिसमें आपके आधार के सारे डिजिट्स
नहीं विजिबल होते हैं. So they say कि there are less chances of it being misused. So get a masked Aadhaar, which is what I plan to do now. There is an Aadhaar app. आधार ऐप में जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हैं. आई डिडंट नो दिस, आई ओनली केम टू नो दिस yesterday. I plan to do that. Aadhaar app में there are also other things, other advantages, that you can use to keep your Aadhaar card safe and sound. So for now, this is all I advise, and hope and pray that my money comes back. I don't know if it will, but keeping my fingers crossed. And all the best. सतर्क रहें, सुरक्षित रहें. Okay, too late, I know, but at least for you guys, I hope you stay alert and stay safe. Bye.